Anybody? Yes, sir, Saad, not here, John. Oh, We are okay. listening you. Okay, you can hear. So we're gonna Yeah. go ahead and present the case first, and then we'll start it. Our next patient is a 40-year-old female who presented to us with a complaint of right hypochondrial pain since 1 year. ERCP and stenting was done 10 years back. Then lab chole was done 5 to 6 years back. Then an ERCP and stenting was done in September, and then in October it was done. So stent is placed. CT scan shows mild dilation of the intrahepatic duct and enhancing thickening at the confluence of the biliary channels, and few enlarged lymph nodes at the parahepatic and the para-aortic and the peripancreatic region. Now we'll proceed with the EUS. So basically, the indication for EUS is there are porta hepatis lymph nodes, and there may be a possible thickening of the bile duct. Okay, let's go ahead. पी जाइए शाबाश पी जाइए बस हो गया वेरी गुड ठीक है, अब यहाँ पे तो स्कोप को जो है ना सीधा इसी तरफ अभी से कर लें, एंड जस्ट कीप थोड़ा सा इन्फ्लेट करें तो आपको वॉल नज़र आना शुरू हो जाए, क्योंकि कुछ का स्ट्रक्चर होगा तो यू हैव टू गो वेरी जेंटली, कीप गोइंग जेंटल जेंटल, ठीक है, gentle, you get through the GE junction. Okay, stop there, and then big wheel, rotate a little bit to the left, the scope. बिग व्हील Rotation is not with the wheel, right? या So I will, when rotation is, this is the rotation. राइट ठीक है, तो अगर आप स्कोप को सीधा रखेंगे, वो व्हील्स का मैं ये जब होगा तो अप एंड डाउन राइट एंड लेफ्ट, ठीक है, व्हील्स. तो कैन आई सी द स्टमक इन्फ्लेट? Yeah, good. ठीक है, तो ये देखो तो इसके whatever you do right here that needs to be transmitted there, ठीक है, ये देख रहे हैं जी अब नहीं, अभी भी स्कोप आपकी रेस्ट कर रही है, स्कोप नीड्स टू बी स्ट्रेट, ठीक है, थोड़ा सा पीछे हो जाए स्टेप, ओके, अब रोटेट करें, राइट, देख रहे हैं इस तरीके से, दैट्स व्हाट नीड्स टू बी डन, ठीक है. अब मुझे दिखाएं जी जंक्शन दोबारा, इन्फ्लेट हियर, आई जस्ट वांट टू शो यू लाइक, ओके, ठीक है. अब जी जंक्शन से आप नीचे चले गए, जस्ट गो टूवर्ड्स द ऑपोजिट वॉल ऑफ द स्टमक, राइट देयर, ठीक है. राइट अब आपने सक्शन, ओके, बिग व्हील टूवर्ड्स यू, ठीक है, अब यहाँ पे रुक जाए, ठीक है. यू सी यू आर राइट ऑन टू द लिवर, राइट ठीक है, half of the liver is on the right and other half is on the left almost, Right. okay, थोड़ा सा इसको रोटेट करें राइट की तरफ, ओके, गुड, एक्सीलेंट, ठीक है. तो अब जो है ना, मूव द स्कोप बैक जस्ट अ लिटिल बिट, ठीक है, ताकि 2/3 लेफ्ट की तरफ हो जाए और 1/3 राइट की तरफ हो जाएगा. यहाँ से अब रोटेट करते जाएं टू द राइट, ठीक है, गुड 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 गुड, एक्सीलेंट, कीप गोइंग कीप गोइंग कीप गोइंग कीप गोइंग कीप गोइंग, चलते जाएं चलते जाएं चलते जाएं चलते जाएं, ठीक है, थोड़ा सा रोटेट, चलते जाएं चलते जाएं चलते जाएं. ओके, अब जो है ना, आपके सिर्फ ये यहाँ पे हो रहा है, नथिंग इज हैपनिंग देयर, कुछ भी नहीं हो रहा, आप उल्टे हो जाएंगे तो Right. फिर भी नहीं होगा, ठीक है. ट्रांसमिट नहीं तो हो रहा हाँ, ट्रांसमिट नहीं हो रहा, दोबारा यहाँ से शुरू करें, आप करें दोबारा, इट नीड्स टू बी ट्रांसमिटेड, ठीक है, नहीं तो आप एओर्डा तक कभी नहीं पहुँचेंगे, ठीक है. चलते जाएं चलते जाएं चलते जाएं, ठीक है, चलते जाएं चलते जाएं चलते जाएं, ठीक है, ऑलमोस्ट देयर, राइट, ठीक है. अब एओर्डा आ गया ना आपका, ठीक है, थोड़ा सा रोटेट करें राइट की तरफ, ओके, गुड, एक्सीलेंट. तो अब एओर्डा यहाँ पे आ गया, अब होल्ड करें स्कोप को, ठीक है, we're gonna just Proceed follow the करें. aorta, हाँ जी, Proceed प्रोसीड करें, but aorta needs to stay in wheel, ठीक है, ओके, एंड व्हील आपका जो है ना पुल कर रहा है, आप थोड़ा सा रिलीज कर रहे हैं, ठीक है, ओके, गुड, ठीक है. अच्छा एक मिनट यहाँ पे रुकिएगा, ये बहुत दूर मेरे लिए पड़ रहा है, जैसे नहीं तो ठीक है, हालांकि- आगे नज़दीक हो जाए. व्हील आप बहुत ज़्यादा मूव कर रहे हैं, तो इसको उसको जो है ना, यहाँ पे उसको setting- रिलैक्स करने दें व्हील को ना, ठीक है, राइट देयर, ठीक है, जेंटली एडवांस करें स्कोप को, पकड़ें ना, देख, रोटेट. देखिए कितनी रोटेशन आपको ये करनी पड़ी है, तो जस्ट डू अ लिटिल बिट मूवमेंट, वही वाला हिसाब है कि स्कोप का जो है ना 1-to-1 ट्रांसमिट नहीं हो रही, ठीक है. अगर यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा एडवांस करें स्कोप को,
or rotate right and left to see sometimes the celiac comes off the side of the aorta, ठीक है? चलते जाएं, right there, वो देख रहे हैं आप celiac? Right there, ये है celiac, ठीक है? अब दर्द थोड़ा सा rotate करें right there, big wheel a little bit towards you, towards me. हाँ, just a little bit, ठीक है? इसमें very gentle movements है, यहाँ पे aorta है ना, ठीक है? अब straight है, तो अगर आप यहाँ से इसको rotate करें little bit to the right or left, मैंने left की तरफ किया है तो celiac आ गई है, ठीक है? Sometimes the celiac comes off the side of the aorta, okay? Big wheel a little bit towards you, Yeah. inflate the balloon a little bit, वो थोड़ी सी है, right there, that's it, okay? अब दे, let's follow the celiac, ठीक है? Right. celiac को follow कर रहे हैं ना, ठीक है? Gently, Push करो. हाँ, gently, very gently, और थोड़ा सा इसको rotate करें right and left to see where it is going, ठीक है? Okay? Looks like it's kind of the common hepatic is going downwards right there, and this is splenic, so we're going to just follow the splenic, ठीक है? Follow the splenic. जब थोड़ा सा इसको थोड़ा सा दिन और दूर right or left करना पड़ेगा, ठीक है? तो release the wheel now. Release means okay. Away from the word. Yeah, away from and just gently advance the scope. Takes you Yeah, straight हमारा to the pancreas. Pancreas आ गया. ठीक है? This is pancreatic duct? Yeah, that's the pancreatic duct. Right. ठीक है? तो अब splenic artery यहाँ पे है, splenic vein यहाँ पे है, pancreas यहाँ पे है. We're not seeing anything because there is too much artifact there. ठीक है? तो आप deflate करें balloon को completely और थोड़ा सा inflate करें, very minimal. थोड़ा सा inflate करें balloon को, थोड़ा और करें और put a lot of water in there in the balloon now. Okay. अब दोबारा उसको deflate करें. ये क्यों करवाया था? और ताकि वो एयर जो है ना बलून जो है ना वॉल को लगे, हाँ आर्टिफैक्ट से देयर इज अ एयर ऑन द वॉल, तो थोड़ा सा इन्फ्लेट करो दोबारा. आई थिंक दैट्स फाइन, अ लिटिल बिट बेटर. तो एटलीस्ट आपको ये नजर आ रहा है ना पैंक्रियास, ठीक है? ये क्या है? This is splenic artery. ये क्या है? Splenic vein. ठीक है? And और this ये is होल pancreatic पैंक्रियास, duct. ठीक है? पैंक्रियाटिक डक्ट राइट इन द सेंटर, तो आप ऑलमोस्ट बॉडी के ऊपर है, ठीक है? टू गो टूवर्ड्स द टेल, व्हाट डू यू नीड टू डू? हमें ये clockwise rotate करते हैं and ठीक. हल्का सा उसको पुल करते just हैं, to ठीक है? अगर पैंक्रियास आपका राइट की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो आपको स्कोप पुल करनी पड़ेगी टू ब्रिंग इट अंडरनीथ द ट्रांसड्यूसर. अगर लेफ्ट की तरफ जा रहा है तो आपको पुश करना पड़ेगी, ठीक है? सो रोटेट टू द राइट. किधर जा रहा है पैंक्रियास? pancreas अब ये इस तरफ जा रहा है, to the left जा रहा है. तो क्या करना पड़ेगा आपको? ये थोड़ा सा अंदर push करना पड़ेगा. बिल, ठीक है? एंड देन रोटेट, कंटिन्यू रोटेशन, ठीक है? काइंड ऑफ लॉस्ट देयर, ठीक है? तो आपका देयर इज नो पैंक्रियास एनीमोर, राइट? ठीक है? Go to the left. वो इसी पोजीशन में है. Yeah. I don't see any pancreas right there. I think pancreas may be up here. Okay. Pull the scope back. Pull back further. So rotate करें. Right there. That's the pancreas. You see that? जी. ठीक है? तो आपका पैंक्रियास ऊपर था, वहाँ पे जहाँ पे हम देख रहे थे वहाँ पे नहीं था. तो ये नज़र आ गया आपको पैंक्रियाटिक डक्ट, ठीक है? If I put a Doppler on there, there is no flow in that, ठीक है? और यहाँ से अब रोटेट करें राइट को, पैंक्रियास आपका यहाँ पे है, चलते जाए. Hold the scope back a little bit, ठीक है? Just a little bit. Good, excellent. Keep going to the right. Keep going. We still have a pancreas there, ठीक है? We gotta keep looking at it until we completely there is no pancreas there, ठीक है? चलते जाए. अब आपका लेफ्ट किडनी आ रहा है ना ऊपर, ठीक है? This is left kidney. लेफ्ट किडनी आ रहा ठीक है है. और looks like it should the tail. I still see a duct right there, maybe a little bit. It might be ending in there. Something maybe even going downwards, which you are not seeing in the right plane right now. So what I'll suggest is release the wheel a little bit, and rotate to the right. Right. No, this way. Right. Oh, sorry. Other right. Right. So I don't see much. I still see the duct right there, but nothing beyond that. ठीक है? Right. आप ऐसा करें, थोड़ा सा एडवांस करें स्कोप को.
अब मुझे स्प्लीन देखना है। नहीं स्प्लीन को या छोड़ देख- दें, हमने स्प्लीन नहीं नहीं देखना। मैं यही पूछ रहा हूँ कि क्या चीज़ देख हाँ कैसे- वो जब स्प्लीन पे अब यही पूछ रहा था कि किस चीज़ को देख रहे हैं हम, पैंक्रियास पैंक्रियास को देख रहे हैं ना, ठीक है। तो हम सिर्फ अभी पैंक्रियास हम का कर रहे हैं, ठीक है। तेल- आपका लेफ्ट किडनी नज़र आ गया, जी, जी, सही। रोटेट करें राइट को करते जाए, ठीक है। थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ जाए, थोड़ा सा, लुक्स लाइक इट एंड्स राइट समवेयर देयर, ठीक है जी। ओके। अब लेफ्ट की तरफ एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते जाएं, हमने नेक की तरफ जाना है, ठीक है। ठीक। बॉडी से होते हुए चलते जाएं, गुड एक्सीलेंट। चल अब यहाँ पे रुक जाएं, देख रहे नाइस पैंक्रियास, ठीक है। डक्ट इज गुड, कीप गोइंग टू द लेफ्ट, कीप गोइंग, एक्सीलेंट, डक्ट राइट देयर, ठीक है। अब जब ये जो है ना थोड़ा सा आपसे भागने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, यू नीड टू एडवांस द स्कोप जस्ट अ लिटिल बिट एंड बिग व्हील टुवर्ड्स यू। थोड़ा सा एडवांस करें स्कोप को, ये देख, इट विल फॉल डाउन इनटू द नेक राइट देयर, ठीक है जेन्यू में आ रही जी बिल्कुल, राइट। ठीक है। एंड यहाँ पे पोर्टल वेन भी नजर आएगी। सॉरी आई एम जस्ट आस्किंग ओके, लेट्स जस्ट सी द डार्क, जी, ठीक जी, है। जी। अच्छा इसी को हाँ follow इसी को फॉलो करते जाएं, So ओके। we are going to anti-clockwise. Big wheel towards you a little जी। bit, big wheel towards you a little bit, ठीक है। और Right. just advance the scope a little bit, okay। लेफ्ट की तरफ रोटेट करें एंटी क्लॉकवाइज, ओके। वी आर लूजिंग दैट, रोटेट इट टू द क्लॉकवाइज राइट देयर, ठीक जी, है। जी। अब ये कॉन्फ्रेंस आपको नजर आ रहा है पोर्टल वेन का राइट देयर, ठीक ठीक है, है। सर। दिस इज व्हाट यू आर टॉकिंग ठीक अबाउट, है। ठीक है। तो डक्ट यहाँ पे, बिग विल टुवर्ड्स यू अ लिटिल बिट, ठीक है। अब थोड़ा सा एडवांस करें स्कोप को, आपको नजर आ गई ना पोर्टल जी, ये वेन, दिस इज व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है। तो एक्सीलेंट राइट देयर, ठीक है। Right. So that's what you are looking at the portal conference. Pull the big wheel towards you a little bit, rotate to the right there. जी, ठीक ये है। portal. Portal vein आ गई? Portal vein, why there is no flow? That's portal vein or something else? Rotate to the right? No, that's a solid organ, I think. Right there. This is that area, portal conference now. ठीक। ठीक है? तो कौन सा सर यहाँ पे एरो है ये? yeah, this is the conference. So this is a splenic, ठीक है, this is SMV, ठीक है, they're making a portal vein, ठीक है। and that's going towards the liver here. Right. You see a portion of the pancreatic duct right there? ऊपर जी ये सर। जहाँ पे arrow है, right where the arrow is. Okay. You see that? That's a part of the pancreatic duct. So pancreatic duct is coming right here, and you're seeing a one portion over there, other portion over there. So this is the portal vein right here. Go to the और left. ये पैंक्रियाटिक डक्ट जो है ये Crossing into the Neck. from the neck into the head. हेड में। ठीक है। तो portal vein, yeah, you can follow that downwards, or bile duct would be somewhere in there, and but we are not going to pay attention to that right now. Right. यहाँ से आप लेफ्ट की तरफ जाएं, लेफ्ट की रोड, ठीक है। और No, just let's see the duct right there, that's it. Okay. I think I saw the neck of the pancreas right there. I'm just wondering what that is. Is some solid organ or the lymph node or something is there? But we'll take a look at that. ठीक It may be close to the hilar area. ठीक है. तो चलें अब चलें D1 में चलें. I think it may be a lymph node right there. वो Doppler बिल्कुल नहीं है उसमें ना. This is the one porta hepatis lymph node possibly could be in that area. ठीक है. तो उधर चल जाओ। हाँ जी, आप ड्वार्नल बाउल में if you don't see it, what you can do is like वापस अब दूसरा ये कि आप स्क्रीन बड़ी कर सकते हैं, ठीक है। So you're getting a little further, ठीक है। So that's why it's important sometimes just take a look with the bigger screen. ये करना है बड़ी। Okay. Now let's come back to the stomach and then go again. Come back to the stomach because you need a. So when you are pulling it back, the scope is coming into a short position, but we need it in long position when in the duodenal bulb. Right. So come back a little bit. Okay, start over. Good. Right there. Good. Now let's go into the bulb a little bit.
Big wheel से just यहाँ पे stop हो जाए, big wheel a little bit away from you, अवे away, ठीक है? To see where the lumen is, थोड़ा सा उसको inflate करें आप? I just want to show you कि what you need to take a look where the transducer needs to go. हाँ जी बिल्कुल. Let's go do it again. It's okay. ठीक है. आप no, you keep falling back. जी मैम अब सही इन्फ्लेट करें ज़रा इसको, ठीक है? तो वहाँ पे डॉर्नल एपेक्स शुरू हो रही है. तो गोल इज टू गो इनटू द लेफ्ट अपर कॉर्नर ऑफ द डॉर्नल एपेक्स, ठीक है? बिग विल a little bit towards you. Okay. So just go in with the scope a little bit while big wheel towards you, and now suction everything. Inflate the balloon a little bit. Okay. Rotate a little bit to the right. यार ये बड़ा कर देना. बस ठीक है. Go a little bit to the left now. आपको क्या नज़र आ रहा है यहाँ पे आप? Okay, मैंने I'll stop it here, ठीक है? फ्रीज करता हूँ. ये this is probably the portal when here this one it's a portal This one is portal, okay. फ्लो करके देख लेते हैं and then ऊपर जो है आपका बाइलैक ये pancreatic duct is this One thing at a time, right? So this is what is CBD? ठीक है, this is pancreatic ठीक है. And the head of the pancreas. ये क्या है? again node You think it's a node? पहले फ्लो करके देख लें नहीं, what the possibility is flow करके या देख फिर ले. this is portal vein की continuation में आ रहा है SMB, is it SMB ठीक है? वो यहाँ से आ रही है ठीक है. और स्प्लेनिक नीचे से आ रही है, making the portal vein right there, Right, ठीक है? right. तो just इसको थोड़ा सा रोटेट करें, just gently advance the scope a little bit, ठीक है? अब इसमें से आपने एक चीज़ पिक करनी है, या तो आपने pancreatic duct पिक करनी है या bile duct. We'll take a look at one thing at a time, ठीक है? तो कौन सा किस पे आपने कंसंट्रेट करना है? Bile You just pick, ठीक है? Bile Bile duct? Okay, let's pay attention to that. Let's find the bile duct properly. Rotate a little bit towards the left. Okay. ये वाला lymph node जो है ना, ये वाला हमें नज़र आ रहा था, जो हाँ हम पहले देख रहे थे. So it's a porta hepatis lymph node. जो हम स्टमक से नहीं नज़र आ रहा था हमें, that's what it is, ठीक है? तो पूछ सकता ये lymph node वैसे well circumscribed नहीं है it doesn't look like malignant lymph node to me honestly. It looks like a benign triangular shape. You see the fibrous strands, and it's not like a hypoechogenic. It's more like a portions with the isoechogenicity, ठीक है? ठीक है? तो let's go back to the bile duct. Good. Right there, ठीक है? ये bile duct आ गई ना आपकी, जी, ठीक है? bile duct में stent लग रहा है ना? stent है ना इनका आपको? जी है हाँ जी, बिल्कुल. ये जो whitish line आ रही ये है वाइटिश और दूसरा ये कि एयर भी है bile duct में आपके, और दूसरा ये दोनों जो है ना हाइपर एक्योजेनिक, दैट्स अ स्टेंट, ठीक है? और pancreatic duct राइट यहाँ पे. तो लेट्स जस्ट फॉलो दैट. कहाँ अब आप ना ऑलमोस्ट सेंटर में है, ठीक है ना bile duct के. तो टू फॉलो इट टुवर्ड्स द एम्पुला व्हाट यू नीड टू डू, ये राइट साइड पे ठीक है? कीप गोइंग, कीप गोइंग, गुड जॉब. यहाँ पे अब देखें ना आपसे, इट्स रनिंग अवे फ्रॉम यू. सो व्हाट डू यू नीड टू डू? बिग विल टुवर्ड्स यू, दैट विल पुल इट अप. जी Gently advance the scope to approximate it further, and then keep rotating to the right. Nice. Keep going, keep going, keep going, keep going, keep going to the right. Excellent. Keep going. ठीक है? We still did not see the pancreatic duct very clearly in that area. ठीक है? अब let's go back anti-clockwise. Anti-clockwise. Maybe just because of the shadowing from there as well, from the stem. Okay? Right there. ये क्या है? नजर आया? ज़बरदस्त. ठीक है? तो bile duct ऊपर है, pancreatic duct नीचे, ठीक है? Rotate to the right a little bit. Right there is the pancreatic, right? Bile duct is right here. थोड़ा सा rotate करते जाएं right पे, थोड़ा सा और. Looks like this is the ampullary area. क्योंकि ये आपको duodenal wall नजर आ रही है, ये muscularis propria ऊपर से आ रहा है, ठीक है? तो likely this is where it ends, ठीक है? अब दो चीज़ें कर सकते हैं. bile duct को follow करें towards the hilar area, ठीक है? या pancreatic duct. Let's finish with the bile duct. So let's follow that towards the hilar area. क्योंकि एक चीज़ इसका ये था कि हाइलम हमने देखना था फॉर द lymph nodes, ठीक है? तो इसको कंटिन्यू उसके लिए क्या करना होगा आपको? परफेक्ट. कीप गोइंग. बिल्कुल. तो ये सारा जो है ना, देयर इज सम sludge in the bile duct as well around the stent. You see that? Right. So
ओके तो अब यहाँ पे ठीक है आपको बायोडक्ट जो है ना, अब आपके पास और कोई चारा नहीं है, अगर आप रोटेट करेंगे तो इट माइट डिसअपीयर, सो व्हाट डू यू नीड टू डू इज मूव द बिग व्हील अ लिटिल बिट अवे फ्रॉम यू, देयर यू गो, लिटिल बिट मोर अवे फ्रॉम यू, ठीक है। अब दोबारा आपके व्यू में आ गई है, नाउ यू रोटेट एंटी क्लॉकवाइज, कंटिन्यू दैट, आपके फिर गायब हो रही है, तो यू पुश द स्कोप इन अ लिटिल बिट, push the scope in and keep rotating and move the big wheel away from you. You see the bar, like there's a lot of sludge in there, and you see the stent. There's a sludge around the stent. You see it's moving around as well, and it's whitish. The lumen is not very clear. So and you see sludge की क्या identification है? ये देख रहे हैं ना कैसे मूव कर रहा है ठीक है, आपका, और दूसरा ये कि stand और स्टेंट के आसपास मूव कर रहा है, वी नो इट्स अ बायोडक्ट, देयर इज अ स्टेंट इन देयर, एयर भी है, ठीक है। और दूसरा ये कि इट्स नॉट, इट्स काइंड ऑफ अ मोर लुकिंग लाइक अ आइसोएकोजेनिक, ठीक है, कुछ देयर इज सम शैडोइंग व्हिच मोस्टली फ्रॉम द एयर। तो आप जो है ना इसको रोटेट करते हैं लेफ्ट की तरफ, वी स्टिल आर नॉट डन विद द बायोडक्ट, स्टिल नॉट डन विद द बायोडक्ट, keep going until you see the liver area, you see the air in there, big wheel a little bit towards you, so maybe release a little bit now, that was too much, keep rotating to the left, keep rotating, now we started seeing the liver, you see that, so that's, we're right at the porta hepatis right now, ठीक है, ये सारी air है और sludge है इसमें। तो लिवर आ गया ना, वो इसलिए आ रहा है कि हम हाइलम के बिल्कुल करीब हैं, पोर्टा हेपेटिस, ठीक है। अब यहाँ से दोबारा आप रोटेट करें क्लॉकवाइज while keeping the bile in view, good, keep going, keep going, keep going, keep going, keep going, देख रहे हैं bile duct, बिल्कुल, keep going, right there bile duct, ठीक है। अब थोड़ा सा big wheel towards you to get rid of that air, you see that how it disappeared, ठीक है, चलते जाएं राइट की तरफ, चलते जाएं, okay, big wheel towards you now, pull the scope back a little bit because you are losing it this way, ठीक है, अभी तो ये बहुत ज़्यादा artifact आ गया, तो I think maybe just put a little bit water in there in the balloon, और जब ठीक हो जाए ना तो उस वक्त stop there because you don't need to fill it up really. I think still, yeah, I think a lot of air bubbles there. Challenge, if it doesn't, what you need to do is need to completely get off the wall, see the lumen, and then fix it. You see so much air in there. Okay. You can always start over, ठीक है? और हमने वो तो देख लिया, हमने पहले एम्पुला देख लिया था, तो but we need to go back to the ampulla to take a look at the pancreatic duct. You remember? Take it. Okay. Come back a little bit. Come back. You can come back into the stomach and go back in there. That is fine. हाँ, ठीक है. चलते जाओ. Good. Big wheel towards you. Okay. अब छोड़ दें इसको ना, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है. Big wheel towards you. Approximate. Perfect. ठीक है. Let's find the pancreatic duct now. क्योंकि bile duct is right here. ठीक है. And this is the area of the ampulla. You see the wall muscularis propria? That's the ampulla. So PD is going to be right here. ये जो black नहीं है नजर आ रही, ठीक है, यहाँ से ये जो इसको कहते हैं duodenal fall. आपको stent नजर आ रहा है, उसके नीचे PD नजर आ रहा है, ठीक है. Let's follow the PD now, ठीक है. So big wheel towards you, little bit towards you. We are at the ampulla, so we have to get to the neck, ठीक है. From here, big wheel towards you, a little bit more towards you, or rotate to the left while pushing the scope in a little bit. Good. You see, अब बेहतर हो गई है, more from. It will go this, then this way, and then it's going to come around the portal confluence like this. ठीक है? So that's the course we will have to follow. Okay, let's not lose it. Push the scope in a little bit. Okay, a little bit more. Okay. Now keep rotating anti-clockwise. Keep rotating. You got it. You see that? How it's going? Keep going. And the portal confluence is coming. Keep going. Perfect. Excellent. Keep going. Big wheel towards you. Little bit because you're losing that. And it's going to go into the genu and fall down that line. But you got all that. Right? You see? Still there.
You remember this is why the lymph node we were looking from the stomach earlier? So that's the same lymph node which you were looking. And it was close to the portal vein, it was close to the pancreatic duct, and that was the area where it was in the genu. Big wheel a little bit towards you further. खालिद भाई ड्यूटेनल फॉल एक दफ़ा प्लीज़ दोबारा से डेमोन्स्ट्रेट कर देंगे? अच्छा, keep going, 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 anti-clockwise, keep going, good job, excellent. Keep going, anti-clockwise, anti-clockwise, let it fall down, there you go. Okay? That, we saw that area from the stomach as well, and we saw that again, and we see a lymph node again. Earlier it was on the opposite side, and now it's closer to the transducer. Consider it, earlier we were looking from the top down, and now we're looking from the bottom up, because it was a short scope position from the stomach looking down. We are in a long position and looking up like that. Right. So that's why everything flipped. Okay? Right. Okay. So good. The duodenal fall. 1 minute, sir. Thank you. Good. Excellent job. ये वाला मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है? अब look at that, how beautiful. As soon as I put my scope right where I need to into the duodenal bulb, right at the duodenal apex, you see the pancreatic duct right here. If I need to follow that, I'm just trying to keep the pancreatic duct right underneath the transducer until it disappears into the genu. Right there, you see that? And now going back, going back, going back. Right there, going back means towards the ampulla. Going towards the ampulla. थोड़ा सा और दे दें. Light हुई है, ठीक है. Just give me 30 seconds. Let the patient stabilize, and then I'll show you the duodenal fall again. Okay? Okay. So, anybody there? Does anybody want me to FNA the lymph node, or you guys are happy that it's a benign? Okay, nobody wants to answer that. क्या कह रहे कर ले? It looks benign to me. I need to ask Saad bhai or Dr. Sajda. खालिद भाई जी. जो पिछला केस था ना जिसमें बिनाइन लुकिंग नोट था वो मेलिग्नेंट निकल आया तो मेरे ख्याल है कर ही लेते हैं फिर. One thing where I don't know if you notice in that lymph node was not sticking to the needle. Needle was moving very easily into back and forth. So yeah, so that was one thing I say, like a benign lymph node usually sticks to the needle. Okay. So आप duodenal fall की बात कर रही थी यहाँ पे ना? So you see the bile duct right there, you see the pancreatic duct right there. So I will follow that towards the ampulla, following that towards the ampulla. And do you see this black line right there? जी हाइपोएक्विक जो सीबीडी के साथ आता है जी ठीक है. That's the duodenal muscularis propria. Okay. इसको duodenal fall कहते हैं. You need it to go down to really take a look at them. ठीक है. Thank you खालिद भाई. To keep that, because if you don't see that, you don't know if you're maybe in the upper head of the pancreas and the just pancreatic duct and bile duct are coming close to each other. That's it. And sometimes they go parallel to each other for 2-3 centimeters, and you think you are at the ampulla, but you really are not. You are in the distal head of the pancreas. यहाँ से जो pancreatic duct को देखा था वो आप clockwise rotate करते हुए. नहीं, हाँ clockwise ampulla हो गया ना. तो फिर उसके बाद बाकी pancreatic duct को देखने के लिए you have to do the whole movement is anti-clockwise. अच्छा, the same. उसके लिए CBD के लिए भी anti-clockwise था और इसके लिए भी anti-clockwise. Exactly. बिल्कुल ठीक है. ये बहुत ही benign lymph node लग रहा है, seriously.
ये बहुत ही लग रहा है तो फिर देख लें खालिद भाई, रहने देते हैं. Okay. So I know it's a larger and but it really looks very benign. If they want me, I can. I'm happy to do it. I don't know how many cases are left. So ये आपको नज़र आ रही है pancreatic duct. मैंने D2 से शुरू किया है यहाँ से. You see जी, that जी. pancreatic duct nicely right at the ampulla, जी, and जी. it's going through the genu up there. It's taking a turn and it's going to go up there. So I'm coming back from D2 and just mainly basically paying attention to the pancreas. You see that pancreas is still there. Pancreas is still there. You see the duct right there still? जी खालिद भाई आ रही And है यहाँ पे. yeah, I'm almost in the proximal body now. I'm back into the stomach and right there you see that, and getting back to the tail, right that area in this area, right here, going all the way to the tail. ठीक है? आ जाओ आप. Let's do one time D2. नहीं D2. हाँ जी D2 एक दफ़ा कर लें. करना है आपने? जी जी. हाँ जी ठीक है. I think you noticed that everything in there, Yeah. like aorta, IVC, right kidney, and then from there I rotated it to the right to get to the pancreatic duct and bile duct, and then just moved back. Okay. ठीक है, good. ठीक है, अब short position में आ जाए. ठीक है. आपने उससे कहा था एम्पुला देखना जरूरी नहीं है. जरूरी नहीं है, बिल्कुल exactly. Short position में scope is staple. You see that here at the stand, so that's now big will towards you. ठीक है, suction करें all the air out. Actually जो है ना वो ज़रा लगा दो उसको दोबारा EUS पे. ठीक है, तो air is still there, so air should be suctioned from right in the center of the lumen. So right there. Okay, good, excellent. So here, what do you see? Just stop right there. Do you see anything which makes sense? What is this? IVC, क्योंकि very compressible. You see that? Yeah, Okay, yeah. so IVC is, and from there you rotate it to the right. And what did it come? is aorta. Aorta. ठीक है. अब यहाँ से आप rotate करें left की तरफ. सर ये तो नहीं, ये खुद ब खुद ही हो गया. I didn't do No, this. because you are in the right position. You said IVC shorten the scope, and you're in the right position. You rotate it a little bit. Something is going to come out of those five structure if you are in the right position. ठीक है? So either it's going to be right kidney, it's going to be IVC, aorta, bile duct, pancreatic duct. One thing will come out of those five if you are nicely reduced in the right position. And one thing you will see that like there is not much space in the between those if your scope is in the right position. तो अब aorta आ गया, ठीक है? उसको aorta को लेके आए position में दोबारा, right there, ठीक है? अब यहाँ पे जब aorta position में आता है, तो I start looking in the right upper corner and I see the pancreas right there, ठीक है? This is a pancreatic tissue right there. नजर आ गया ना आपको, ठीक है? अब इसको मैं भूल जाऊंगा aorta, ठीक है? I will pull the scope back gently. Pull the scope back, pull the scope back, pull it, pull it, pull it. Release the wheel a little bit, just very little, ठीक है? आप pull करते जाएं और, and the reason I'm releasing the wheel is so I don't want to put too much pressure on the duodenum, ठीक है? चलते जाएं और pull करें थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, ठीक है? And this is one of the duct looks like, right? Right there, ठीक है? Rotate करें right या left की तरफ, maybe not. That's a vessel. So let's rotate to the left. So this is pancreatic tissue, no question. So let's go back into the on the aorta.
Release the wheel a little bit. Okay. Now rotate a little bit to the left. हाँ, ठीक है. आपने ओवर करेक्ट कर दिया था अपने आप को, ठीक है. आप बहुत राइट की तरफ चले गए थे. This is a very nice actually view. You see the pancreatic duct here, you see the ventral head of the pancreas, and you see the dorsal head of the pancreas. There's a nice demarcation right there. ठीक है? Okay. So big wheel towards you. A little bit. Okay. A little bit more. Okay. Now pull the scope back a little bit. Can you get the PD in the better view? ये एयर मेरे ख्याल स्टंट की में से आ रही है, ठीक है. रोटेट राइट और लेफ्ट. थोड़ा सा हार्ड हो रहा है, यानी पुल करना थोड़ा सा व्हील. स्टंट आ गया आपका वहाँ पे, ठीक है. राइट देयर इज द स्टंट, यू सी दैट. दैट इज सीबीडी. या सीबीडी स्टंट. यहाँ से रोटेट करें राइट की तरफ, a little bit more, little bit more, little bit more. You see the PD right there, ठीक है. तो ये pancreas था वो. अब go a little bit to the left. So you never put too much pressure. When it's not coming back, you stop there and then do a right and left to find your structure. If you don't find, then you release the a wheel a little bit bigger one. Okay? So we got that here. We know that right there. Pancreatic. So we're just going to pay to the attention to the pancreatic duct. Never lock the wheels, which you did the right thing. Okay. Now start gently pulling back your scope. Gently. And when it gives you a resistance, the wheel, you let the wheel go slowly. Okay? Keep coming back. Keep coming back. Big wheel a little bit towards you. You see that? Yeah. Just to take a look at that. ठीक है? चलते जा. Keep pulling back. Keep pulling back. This is all pancreas. ठीक है? It's going to fall back in just a second. ठीक है? Into the stomach. Good. Release the wheel a little bit more, I think. This is pancreas. Yeah, this is the pancreas. Yeah. No. This is a vessel. This is a mesenteric vessel. ठीक है? चलते हैं. Yeah. You see that pancreatic duct right there? You fell back into the stomach. I could see that. The way it fell. ठीक है? Okay. Felt it. Yeah. Up there. Yeah. Up to just you are on the pancreas. Just follow that all the way to the tail. That's it. तो वो okay. That's it. Okay. Left kidney आ गया और यहाँ पे tail है. चलो. Good job. I think mediastinum done anything. ठीक है. हाँ जी. Good. We have done plenty. I think you need to move to the next case. Yeah. Okay. Any question? One thing only, okay, if possible. In the media stand, actually I have done it just to ask वो जो आप वो वाला मैन्यूवर बता रहे थे कि ये वाला हैंड पूरा आपका this is left atrium and left ventricle. हाँ जी. थोड़ा सा इसको rotate करें right and left. Pull it back a little bit. Yeah. There you get left atrium. Pull it back. Pull it back. Pull it back. Now you are right at the Subcarina. subcarina right there. Pulmonary artery is there, which is not seeing, you're not seeing it better, but now it's better. You see that? Too much air in it. ठीक है? और यहाँ पे subcarina. So what was that maneuver that you said ये left hand बिल्कुल for that? Yeah, rotate to the left, anti-clockwise. Anti-clockwise. जी मैं निकाल लूँ. Keep rotating. Left side में? हाँ जी. Keep rotating. Keep rotating. Keep rotating until you get to the aorta. You see that? ठीक है. हाँ जी. Come back a little bit. Okay, right there. Aortic arch. Big wheel towards you a little bit. Push the scope in 1 centimeter. Rotate to the right. Rotate to the right. Rotate, rotate. There you go. The pulmonary artery, aorta, and AP vein. Okay. Chalo. Thank you.